Now we have the you have seen the loading effect on the circuit. To calculate this loading effect, we can consider an example. Let us see this example. A multimeter of sensitivity 4 kilo ohm per volt and the range is 0 to 10 volt. Range उसकी क्या होंगी 0 to 10 volt is used for measurement of voltage across 10 kilo ohm resistance in the given circuit. Calculate the true voltage, apparent voltage and percentage error. Now we will first see in the circuit you have given the circuit this R1 we have given 10 kilo ohm, R2 we have given 10 kilo ohm and voltage applied across is 20 volt. And voltage applied across is 20 volt. Now we will see and we have connect the multimeter across this R2 resistance. ये R2 resistance के across पे हमने multimeter कनेक्ट किया हुआ है. So first true voltage before connecting the multimeter. So before connecting this multimeter, we can calculate true voltage. This true voltage is voltage we have calculated by voltage divider formula. वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला से जो आएगा उसका जो VR2 है वो अपन VR2 वो we have to measure. The voltage across R2 can be calculated by voltage divider formula. So VR2 is equal to voltage across R2. VR2 is equal to R2 divided by R1 plus R2 into voltage V. So R2 की वैल्यू क्या है 10 किलो ओम, 10 किलो ओम. R1 की वैल्यू क्या है 10 किलो ओम. ये R2 की वैल्यू क्या है 10 किलो ओम, 10 किलो ओम एंड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इज 20 वोल्ट 20 वोल्ट. तो ये सॉल्व करने के बाद VR2 कितना मिलेगा 10 वोल्ट. ट्रू वोल्टेज जो 10 वोल्ट, इट इज एक्सपेक्टेड वोल्टेज. दिस इज द 10 वोल्ट. वी हैव द एक्सपेक्टेड वोल्टेज अक्रॉस R2. ये जो एक्सपेक्टेड वोल्टेज है बिफोर कनेक्टिंग मल्टीमीटर वी हैव 10 वोल्ट. उसका रीडिंग कितना आना चाहिए 10 वोल्ट आना चाहिए. We have calculated by calculation. Now we'll see that now we can see that apparent voltage. Second we will see the apparent voltage after connecting the multimeter. When meter is connected across R2, its internal resistance carries in parallel with R2. Now we will see this apparent voltage. What is apparent voltage? After connecting the multimeter in the circuit, we will get apparent voltage. A multimeter jab we have connected across this R2 resistance, then we will get apparent voltage. This apparent voltage internal resistance, this apparent voltage is where meter is connected across R2 internal resistance carries in parallel with R2. इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मीटर का वो पैरेलल में R2 के पैरेलल में आ जाएगा. मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2 के पैरेलल में आ जाएगा. सो वी विल सी इंटरनल रेजिस्टेंस Ri. इंटरनल रेजिस्टेंस Ri कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस मल्टीमीटर वी हैव गिवन दैट sensitivity 4 kilo ohm per volt and range is 0 to 10 volt. So we have formula for internal resistance. We have seen this formula yesterday. The internal resistance for Ri is equal to S sensitivity S into V range. S sensitivity कितनी है 4 किलो ओम पर वोल्ट एंड उसका रेंज कितना है 0 to 10 वोल्ट. 10 वोल्ट आएंगे 10 वोल्ट इज इक्वल टू Ri इज टू 40 किलो ओहम. तो Ri कितना आ जाएगा 40 किलो ओहम आ जाएगा. मीन्स अपरेंट वोल्टेज
इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 40 किलो ओम, आ रहा है कितना का 40 किलो ओम। तो वी कैन सी दैट व्हेन वी कनेक्ट मल्टीमीटर अक्रॉस दिस R2 रेजिस्टेंस वी विल गेट 40 किलो ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस आ रहा है 40 किलो ओम, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके अक्रॉस आ जाएंगे, मल्टीमीटर का रेजिस्टेंस है उसकी वजह से, ठीक है। सो R2 इफेक्टिव, नाउ वी कैन कैलकुलेट R2 इफेक्टिव। ये आ रहा है पैरेलल विथ R2, दिस आ रहा है पैरेलल कम्स विथ R2, आ रहा है पैरेलल विथ R2, ठीक है। सो R2 इफेक्टिव, नाउ R2 की वैल्यू, R2 इफेक्टिव वैल्यू मीन्स उसके पैरेलल में हो जाने की वजह से जो इफेक्टिव वैल्यू आएंगी वो उसे बोलेंगे R2 इफेक्टिव। सो R2 इफेक्टिव इज इक्वल टू R2 इंटू RI, R2 इंटू दिस RI divided by R2 plus RI by we have formula this for the R2 इफेक्टिव, ठीक है। जब दोनों पैरेलल में आ जाता है तो उसकी पैरेलल का रेजिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, R2 इंटू RI डिवाइड बाय R2 प्लस RI। सो R2 इफेक्टिव 10 वोल्ट 10 किलो ओम इंटू 40 किलो ओम डिवाइडेड बाय 10 प्लस 40 किलो ओम मीन्स 50 किलो ओम। सो उसकी वैल्यू आ जाएंगी 8 किलो ओम। R2 इफेक्टिव कितना आ गया 8 किलो ओम। सो जब R2 की वैल्यू 10 किलो ओम है तो उसकी जो वैल्यू आ रही है, जो इफेक्टिव वैल्यू आ जा रही वो हो रही है 8 किलो ओम। जब हम मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे R2 के अक्रॉस तब उसकी जो R2 की वैल्यू जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 8 किलो ओम, मीन्स 2 किलो ओम कम हो जाएंगी, 10 किलो ओम से हो जाएंगी 8 किलो ओम। सो अपरेंट वोल्टेज VR2, सो वोल्टेज अक्रॉस दिस R2 what we will get, VR2 is equal to apparent voltage VR2 is equal to R2 divided R2 effective, this R2 effective, this R2 effective, this R2 effective in divided by R2 effective plus R1, R2 effective, R2 effective plus R1, ठीक है। VR2 voltage across this R2 is now we will get R2 effective divided by R2 effective plus R1 into voltage V into voltage V। सो R2 इफेक्टिव कितना आया है 8 किलो ओम डिवाइडेड बाय 8 किलो ओम प्लस 10 किलो ओम R1 into 20 वोल्ट। सो वी विल गेट 8.88 वोल्ट। VR2 अपरेंट वोल्टेज कितना आ गया 8.